क्या पता है। ओके, तो हम थ्योरम करेंगे रिगार्डिंग द सम ऑफ सबस्पेसेस। सो लेट मी राइट इट डाउन। इफ W1 and W2 are finite dimensional subspaces of vector space V, are finite dimensional subspaces. Control means subspaces of a vector space V, then कोर्स पहली बात तो ये है कि W1 plus W2 is finite dimensional, और इसकी जो डायमेंशन and dimension of W1 plus W2 is equal to dimension of W1 plus dimension of W2 minus dimension of W1 intersection W2. Yeah, minus. So this is what we are going to prove. Now, since W1 union W2 is finite dimensional because it's a subspace, so let me write it. Since W1 intersection W2 is a finite dimensional vector space because it is after all a subspace of a finite dimensional space. So therefore it's itself a finite dimensional vector space because every subspace is a vector space in itself, is a finite dimensional vector space. So it has a basis. Now let me write it. Let dimension, हम इसकी dimension जो है कुछ होगी, let's call it k. Small k whatever जो है, तो मैं k लिखता हूँ, small k लिखता हूँ, small k, okay. And it has a basis, तो इसकी basis होगी और उसमें k elements होंगे, and it has a basis, let's call it alpha 1, alpha 2, alpha sub k. Now ये इसकी basis होगी, implies that alpha 1, पहली बात तो ये linearly independent होना चाहिए, is a linearly independent subset of W1 intersection W2, क्योंकि इसकी बेसिस है तो इसका मतलब पहली बात तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होगी, दूसरी बात होगी ये स्पैनिंग। लेकिन अगर हम लीनियरली इंडिपेंडेंट की बात करें, लेकिन ये जो है नाउ सिंस W1 intersection W2 is always a subset of W1, it implies that this alpha 1 up to alpha k is a linearly independent subset of W1 and hence जो हमने ऊपर किया था is part of some basis. Some basis of W1. Say, मतलब ये किसी बेसिस का हिस्सा है, यानी इसको मैं कुछ और वेक्टर्स ऐड कर सकता हूँ तो ये बेसिस बन सकता है।
So let's call it say beta 1 up to beta m. मैंने इसको वेक्टर्स ऐड किए. So that इसका मतलब क्या होगा अगर ये बेसिस है W2 की, it means that dimension of W2 is equal to K plus M, क्योंकि इसमें K plus M वेक्टर है. ऐसे similarly, since W1 intersection W2 is also a subset of W2. Oh sorry, पहले W1, मैं यहाँ W1, मैंने W1 लिया था, ये W1 की बेसिस, तो W1 की बेसिस मैंने ली K plus M, लेकिन W2 के साथ भी ऐसा ही किया जा सकता है. So therefore we can extend we can extend this set to alpha 1 to alpha k to a basis. Let's call it, इसको मैं और वेक्टर्स ऐड करके W2 की बेसिस बना देता हूँ. So let's call it alpha 1 up to alpha n. अल्फा k है मेरे पास है. फिर मैं ऐड करूंगा गामा 1 गामा 2 अप टू गामा n ऑफ W2. उसका मतलब ये होगा डायमेंशन ऑफ W2 फिर होगा जो इतने इसमें एलिमेंट्स हैं, और इसमें एलिमेंट्स हैं k प्लस है, k प्लस n है यहाँ पे. ओके, बेस करूंगा k प्लस. नाउ कंसिडर द सेट, अगर मैं इन तीनों सेट्स को मिला दूं, नाउ कंसिडर द सेट, वी क्लेम दैट अगर मैं लेता हूँ अल्फा 1 अप टू अल्फा k, फिर लेता हूँ बीटा 1 अप टू बीटा m, कॉमा गामा 1, so on and so forth गामा n, मैं कह रहा हूँ इट इज अ basis of W1 plus W. Now clearly W1 plus W2 is spanned by, मतलब spanning तो ये set है, spanned by this set alpha 1 up to alpha k, then I have beta 1 up to beta m, then gamma 1 up to gamma n. मुझे बेसिस दिखाने के लिए क्या है, पहले तो स्पैनिंग होना चाहिए, दूसरा ही लीनियरली इंडिपेंडेंट होना चाहिए. स्पैनिंग तो ऑब्वियस है, क्यों, क्योंकि क्योंकि एनी वेक्टर इन दिस, एनी मतलब स्पैनिंग क्यों होगा, एनी वेक्टर इन दिस सम can be written as sum of the vectors here and some vector W1 plus W2. Now this W1 can be written as a linear combination of alphas and betas, ये जो W1 है, और W2 can be written as linear combination of this set and this set, यानी alphas and gammas, alphas and betas, मतलब in any case जो W1 plus W2 होगा that would be linear combination of alphas, betas and gammas, क्योंकि पहला वाला होगा alphas और betas का combination, दूसरा होगा alphas और gammas का combination. So in any case, any vector inside W1 plus W2 would be a linear combination of alphas, betas and gammas, because it is a sum of W1 plus W2, and W1 is spanned by alphas and betas, and W2 is spanned by alphas and gammas. So in any case, it would be some linear combination of these vectors. So we only need to show that, this set alpha 1, alpha k, beta 1, beta m,
gamma 1, gamma n is linearly independent. तो हम दिखाएंगे इसमें कि अगर इसकी कोई लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो है तो सारे के सारे स्केलर जीरो हो गए, जो लीनियर इंडिपेंडेंस का क्राइटेरिया है. सपोज सो लेट समेशन इस तरह मैं लिखूंगा xi alpha I runs from 1 to k plus summation, let's call it yi beta yj beta j runs from 1 to m plus summation, let's call it z sub r gamma sub r runs from 1 to n. मान लो ये जीरो है, let's call this part. ये जीरो है, इट इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाज बीटाज गामास. यहाँ हम लिखेंगे where xi's yj's and zr's they are inside the field. तो अगर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है जिसको मैंने अंडरलाइन किया, तो ये xi's yj's और zr's हैं, ये सारे के सारे जीरो होने चाहिए, ये सारे के सारे. तो वही हम दिखाएंगे, ये सारे के सारे जीरो है. लेकिन अगर ये जीरो है तो इसका मतलब ये होगा माइनस समेशन z sub r gamma r runs from 1 to n बराबर होगा समेशन xi alpha plus summation yj beta j. Of course, I runs from 1 to k and j runs from 1 to m. अगर ये जीरो है तो इसका मतलब ये है. But this is a linear combination of alphas and betas, which is a basis for W1. So this is a linear combination of the basis elements of W1. So therefore, this belongs to W1, right? But minus summation ZR gamma R runs from 1 to n also belongs to W2. देखो ये जो वेक्टर है ये W1 भी में भी है, W2 में भी है. क्यों W2 में क्यों है? क्योंकि W2 के जो एलिमेंट्स हैं, बेसिस एलिमेंट्स, वो है अल्फाज एंड गामास. तो इनकी कोई भी लीनियर कॉम्बिनेशन होगी वो W2 में भी होगी. तो ये जो है W2 में है, लेकिन अगर मैं राइट हैंड साइड को देखूं तो वो W1 में है, लेफ्ट हैंड साइड को देखूं तो W2 में है. उसका एक ही अब नतीजा हो सकता है कि ये दोनों में. तो which implies that summation gamma r summation ZR gamma sub r runs from 1 to n belongs to the intersection W1 intersection W2. But W1 intersection W2 इसकी जो बेसिस है, इट इज लीनियर स्पैन ऑफ जो हमने शुरुआत में सेट लिया था, अल्फा 1 to अल्फा k. सो देयरफॉर दिस वेक्टर ये जो यहाँ पे है इसमें बिलोंग करता है विच इज लीनियर स्पैन ऑफ दिस, क्योंकि अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा k is a basis of W1 intersection W2. It implies that this must be a linear combination of alphas. So you must have summation ZR gamma r equal to some summation Ci alpha I runs from 1 to k, यहाँ पे r runs from 1 to n, or Ci is belonging to our field for all I running from 1 to k. Okay, but then this implies that summation ZR gamma r minus plus summation minus Ci alpha I runs from 1 to k and r runs from 1 to n. This must be equal to 0. Now alpha is and gamma is our basis, therefore they are alpha 1 alpha k. फिर अगर मैं लूँ गामा 1, ये हमें किया है, गामा क्या है n is a basis of W2.
basis of W2 hence linearly independent, क्योंकि basis के लिए linearly independent होना जरूरी है, and hence linearly independent. और अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो ये जो स्केलर्स हैं यहाँ पे ये सारे के सारे जीरो होने चाहिए क्योंकि इनकी लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो. इट इम्प्लाइज दैट Z1 is equal to Z2 जितने भी ये वेक्टर्स है up to Zn is equal to 0 and of course C1 is equal to C2 is equal to क्या अपना Cn. सो यहाँ पे k है नहीं, हाँ यहाँ पे n है, यहाँ पे k है, ये सारे के सारे जीरो है. Hence from first जो हमने इनिशियल सपोजिशन किया है, अगर मैं फर्स्ट पे जाऊं या तुम जाओ तो फर्स्ट इक्वेशन ये है. अब इसमें ये पता चला ये सारे के सारे जेड आर जीरो है, इसका मतलब ये हुआ अगर सारे के सारे जेड आर जीरो है इसका मतलब फिर ये सम जीरो होना चाहिए क्योंकि ये इक्वल टू जीरो है, ये सारे के सारे जीरो है. सो देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट आई कैन कंक्लूड क्या मुझे मिलेगा. आई गेट समेशन xi alpha I runs from 1 to k plus summation I have this yi beta yj beta j. Let's write it. J runs from 1 to क्या किया था मैंने m. This is equal to 0. But again ये जो alpha 1 up to alpha k है और फिर beta 1 up to beta m है is a basis of W1. हमने खुद ही इसको माना है. It is basis of W1 and hence linearly independent. Independent, which implies that xi is equal to 0 for all I running from 1 to up to k and yj is equal to 0 for all j running from 1 to up to m. तो ये linearly independent है and hence जो हमारा claim था hence क्या था अपना alpha 1 up to alpha k and I have beta 1 up to beta m and then gamma 1 up to gamma n is a basis of W1 plus W2, which implies that dimension of W1 plus W2 is equal to K plus M plus N. But this can be written as K plus M plus K plus N minus K. But that's the same thing if हम ऊपर जाएं. It is dimension of W1 plus dimension of eraser but it is the same thing as dimension of W1 plus dimension of W2 minus dimension of W1 intersection W2 जो मुझे प्रूव करना था. So that proves our theorem. Now we come to जो मैं शुरुआत में तुम्हें बात कर रहे थे डायरेक्ट सम की. Now अब हमें पता चला प्रूफ या एक डेफिनेशन करते हैं. चलो ऐसे ही लिखते हैं डायरेक्ट सम. So direct sum. So let V be a vector space. V be a vector space of over a field F. Over a field F. F को हम कैपिटल करते हैं ऐसे. And
W1 comma W2 be two subspaces of V, then W1, sorry, W equal to W1 plus W2, the subspace, ये subspace है of V is called the direct sum of W1 and W2 if W1 intersection W2, दो सबस्पेसेस में सबसे कम अगर कोई हमेशा एक एलिमेंट कॉमन होगा, अगर खाली यही एक एलिमेंट कॉमन हो तो हम इसको कहते हैं डायरेक्ट सम। अगर W1 प्लस W2 है और साथ में ये भी है तो हम इसको कहते हैं डायरेक्ट सम। सम तो कहते हैं इसको, लेकिन अगर ये कंडीशन साथ में है कि इनमें सिर्फ ओरिजिन कॉमन है या आइडेंटिटी कॉमन है, एडिटिव आइडेंटिटी, तो इसको हम डायरेक्ट सम कहते हैं। एंड वी राइट इन दैट केस, हम इसको ऐसे लिखते हैं, W को हम फिर लिखते हैं W1, ऐसे करते हैं प्लस और उसको गोल W2, यानी ऐसे लिखते हैं डायरेक्ट सम को। मतलब इसका एक ही है, मतलब इसका ये है कि एक तो W है W1 प्लस W2 और साथ में W1 इंटरसेक्शन W2 जो है, इनमें सिर्फ एडिटिव आइडेंटिटी कॉमन है, क्योंकि वो तो हर एक में कॉमन होगी, लेकिन उससे ज्यादा इनमें कोई कॉमन एलिमेंट, मतलब इसका मतलब ये है डायरेक्ट सम का मतलब। ना अब हम एक करेंगे एक थ्योरम रिगार्डिंग द डायरेक्ट सम। सपोज W1 and W2 are are subspaces of a vector space V and V is the direct sum, such that V जो है वो W1 और W2 का सम है। तो सम तो है, लेकिन डायरेक्ट सम कब होगा उसके लिए कंडीशन, देन ये सम डायरेक्ट सम होगा, then V would be equal to W1 plus W2 if and only if any vector V in capital V can be written uniquely, ये important है, as V equal to W1 plus W2, where W1 belonging to W1 capital 1 and W2 belonging to capital W। देखो ये तो होगा ही इस तरह से, मतलब जब मैं कह रहा हूँ ये इसके बराबर है तो ये तो होगा ही, लेकिन अब हम कह रहे हैं कि ये इस तरह से ये डायरेक्ट सम बन जाएगा अगर ये रिप्रेजेंटेशन यूनिक है। हम दूसरी तरह से इसको नहीं कर सकते, एक ही तरीके से इसको अगर लिख सकते हैं एज अ सम ऑफ वेक्टर्स इन दिस सबस्पेसेस W1 एंड W2, तो ये डायरेक्ट सम होगा। तो अगर यूनिकली नहीं लिख सकते तो ये डायरेक्ट सम नहीं होगा, एक सिंपल सम। सम तो है ही, हम कह रहे हैं सम तब डायरेक्ट सम बनेगा, यानी तब दोनों का इंटरसेक्शन जीरो आएगा, दोनों सबस्पेसेस का मतलब ओरिजिन आएगा, if if this representation of this vector V as sum of vectors in W1 and W2 is unique important element। So prove करते हैं now, since
V can be written as W1 plus W2. उसका मतलब ही है, implies that therefore for any vector V belonging to capital V, V can be written as a sum of vectors. अब हम दिखाएंगे uniqueness और जो हम prove करना चाहते हैं. Where of course this small W1 belongs to the subspace W1 and the small W2 belongs to the subspace W2. तो अब हम क्या दिखाना चाहते हैं? हम दिखाना चाहते हैं अगर ये यूनिक है, सो पहले हम दिखाएंगे अगर मान लो W1 इंटरसेक्शन W2 इज नॉट इक्वल टू, इनमें सिर्फ ओरिजिन कॉमन नहीं है, एडिटिव आइडेंटिटी कॉमन नहीं है, इट implies that there exists some vector u which is not equal to 0 such that u belongs to W1 intersection W2. वही मतलब है, ये सिर्फ ओरिजिन का होगा इनमें कॉमन, अगर इससे बड़ा है then there would be some vector like this. But this implies that u belongs to W1 and u must also belong to W2. Now मैं लेता हूँ जीरो वेक्टर, द एडिटिव आइडेंटिटी जो बिलोंग करती है, नहीं u का ही लेते हैं. Now u also belongs to v and u can be written as u plus 0. U belongs to W1 and 0 belongs to W2. And u can also be written as 0 plus u, where 0 belongs to W1 and u belongs to W2. क्योंकि u जो है एक नॉन जीरो वेक्टर है, जो W1 में भी है W2 में, तो ये दो डिफरेंट रिप्रेजेंटेशंस हो जाती है. So it implies that v equal to W1 plus W2, यूं लिख लो, मतलब u can be represented as sum of two vectors in W1 and W2 in more than one ways. Therefore, if v equal to W1 plus W2 is a unique representation we must have W1 ये कैपिटल है, सब स्पेसेस में एक ही एलिमेंट है जो कॉमन होना चाहिए, वो है 0. Now conversely, be easy है. Conversely, suppose that W1 intersection W2 is equal to 0, यानी इसमें कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है except the origin, the additive identity. So we have to show that the representation is unique. So assume to the contrary, let V belong to V such that V can be written as, say, W1 plus W2, and V can also be written as, say, W1 prime plus W2 prime, where W1 prime belongs to capital W1 and small W2 prime belongs to capital W. मान लो ये यूनिक नहीं है, right? But this would imply ये दोनों बराबर है, तो इसका मतलब ये होगा W1 plus W2 is equal to W1 prime plus W2 prime. But this implies that W1 minus W1 prime is equal to W2 prime minus W2. Now,
Now W2, now LHS, ऐसे मैं लिखता हूँ, LHS must belong to W1, क्योंकि ये भी W1 में है, ये भी W1 में है, तो इनका डिफरेंस भी W1 में है, बिकॉज W1 सब स्पेस है. एंड RHS को अगर मैं देखूं, इट मस्ट बिलोंग टू W2, बिकॉज W2 सब स्पेस है, W2 प्राइम भी वहां है, W2 इनका डिफरेंस भी होगा. लेकिन ये तो बराबर है, यानी लेकिन ये अगर W2 में है तो ये भी W2 में है, और ये अगर W1 है तो ये भी W1 में है. It implies that W1 minus W1 prime must belong to W1 intersection W2. Again, by our assumption, it only contains one element, that is 0. And also, W2 prime minus W2 must also belong to both, which is again only 0. तो अगर ये 0 इस सबसेट में है तो ये 0 ही हो सकते हैं, which implies that W1 must be equal to W1 prime and W2 must be equal to W2. Actually ऐसे होना चाहिए, इसका माइनस जो है ये 0 के बराबर होना चाहिए, which implies that W1 is equal to W1 prime and W2 is equal to W2 prime. So whatever that means, which gives us that this representation is unique. Hence, V is equal to W1 plus W2 is unique and variable. तो डायरेक्ट सम होने के लिए कहने का मतलब, अगर कोई V है, a sum of its subspaces, अगर ये है, उसका मतलब V can be written as W1 plus W2. लेकिन अगर मैं चाहता हूं ये बन जाए क्या, V is equal to W1 this thing, तो वो तभी हो सकता है जब ये यूनिक हो, और ऐसा तभी होता है जब W1 intersection W2 is equal to 0. नाउ ये जो 0 है, ये एक सबस्पेस है. इट इज अ सबस्पेस ऑफ एनी वेक्टर स्पेस. इससे पहले भी कर चुके हैं, और हम हमेशा मानते हैं इसकी जो डायमेंशन है, इसकी डायमेंशन हम 0 मानते हैं कि इसमें कोई बेसिस तो है ही नहीं, क्योंकि 0 ही एलिमेंट है, एक ही बेसिस, मतलब इसमें तो बेसिस हो ही नहीं सकता. सो देयरफॉर रिमार्क के तौर पर हम कह सकते हैं, अगर ऐसा है, क्योंकि हमने किया था अभी, डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 किसके बराबर था, डायमेंशन ऑफ W1 जो ना हमने थ्योरम किया था, प्लस डायमेंशन ऑफ W2 माइनस डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2. नाउ अगर ये डायरेक्ट सम है, implies that जो हमने ऊपर किया अभी, अगर ये डायरेक्ट सम है, डायरेक्ट सम कब ये बनता है, जब ये 0 बनेगा, और अगर 0 बनेगा तो इसकी डायमेंशन 0 होगी. सो डायरेक्ट सम की डायमेंशन सिंपली होती है डायमेंशन ऑफ W1 प्लस ये इसके साथ है, ऊपर वाली लाइन के साथ. चलो मैं नीचे लिखता हूँ. So I can write dimension of W1 direct sum W2 is simply equal to dimension of W1 plus dimension of W2. Now the question is, अभी तक जो हमने देखा, तो कि इसकी हम एग्जाम्पल कर सकते हैं कि डायरेक्ट सम होना और सिंपली सम होना. सो दैट्स वो कल करेंगे. So let me